तो कैसे आप सभी लोग गाइस, वेलकम टू न्यू गेम प्ले ऑफ पोकेमॉन अनबाउंड। हाँ गाइस, ये एक नया वर्जन 2.1 और पहली बार खेलने वाले हम ये। और मैंने इसका पहला वर्जन खेला हुआ है पर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा ही खेला था, थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा। और अब देखना भाई, सब कैरेक्टर सिलेक्शन आ गया। और हाँ गाइस, मैं पासवर्ड करके ही करूँगा मैं। और यार स्किन टर्न नहीं चेंज करते, अब हेयर कलर कौन सा रखे? अरे गाइस कमेंट कर दो मुझे क्या रखते हैं। मैं तो ब्लू ही रखूँगा क्योंकि मुझे ब्लू ही बहुत कूल लगता है। जैकेट अरे सब ब्लू रख दे क्या? क्या बोलते हो? ब्लू के साथ ब्लू, अरे यार ब्लू ही कर लेते सब कुछ, चल क्या जाता है। मुझे तो ब्लू ही पसंद है। अरे कलर क्यों डिफरेंट है? ये ब्लू, ये वाला ब्लू क्यों डिफरेंट है? अरे आ गया मैचिंग कलर। ओके, हमारा नाम मैं हमेशा की तरह निक ही रखने वाला हूँ क्योंकि निक मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगता है। कूल नहीं लगता बस मेरा नाम ही वो है। हाँ अरे फर्स्ट टाइम अरे नो कर देते हैं। अरे पसल में ही करवाऊँ क्योंकि पसल ना मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना। और जो से प्रेफर बैटल डिफिकल्टी ना हम एक्सपर्ट रख देते हैं, एक्सपर्ट। और लाइक नॉट अरे एक्सपर्ट डिफिकल्टी के नहीं, क्योंकि मैंने इस डिफिकल्टी पे खेला हुआ है और मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए मैंने ये करूँगा। अरे वैनिला डिफिकल्टी पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे सैंडबॉक्स मोड, अरे ये देखना, ये सैंडबॉक्स मोड इनेबल कर रहे हैं ना, क्योंकि इसकी वजह से हमें वो पोकी ना, अरे क्या बोल रहे हैं, हाँ मिल जाएगा। रैंडमाइजर नो करो, रैंडमाइजर नहीं। वुड यू लाइक टू प्ले एज ए वेरिएंट विथ रीबैलेंसिंग? नो। अरे यार ये नो, अरे यार मैं स्किप करना चाहता हूँ पर तुम लोग के लिए स्किप नहीं कर रहा, वरना मैं स्किप कर सकता पर तुम लोगों को पता जाना चाहिए। अरे यार तुम पॉज करके रीड कर लेना ये वाला सीन। On the brink of defeat, the Borain king summoned a dark force to help turn the tides of battle. The foreign army's advantage was lost almost instantly. As soon as it entered the battlefield, the dark force had its power to create portals and transport the invading army back home. With the foreign army gone, the war seemed at end for Boris. However, their king, overcome by his lust of power for power, sent the Borain army through the portal as well. The war continued to rage in the foreign land for several regions. Many more men and Pokemon were conscripted to fight and inevitably met their end on the battlefield. On such Pokemon having been a dear friend of the enemy king. Overcome with the grief, the king built a device to restore its life, granting himself immortality in the process. But this traumatic event left him scared and filled with anger. Unable to forgive the world that had hurt his precious Pokemon, he had turned his machine into a giant weapon, the ultimate weapon. King became a bringer of destruction that ended the war. और ये है वो secret weapon. With the war over, what little remained of the Borain army returned home. The king's Pokemon left him and the battlefield became silent. Yet peace was still to come. Enraged over the fruitless war fought, survivors of the war wished for ample compensation from the Borain king. अरे ये Borain king, ये क्या बोलते से Hoopa? हाँ Hoopa. When they had nothing to offer them, they began to manipulate the dark force to attack the Borain kingdom in an attempt to cope. In an effort to stop the madness, the Borain king gathered the legendary Pokemon Articuno, Zapdos, and Moltres. Using the power of the three birds, a prison was created for the dark force, sealing its power. It became a shadow of its former self. Stripped of its power, it was taken in by the king and supervised by his progeny until one fateful day 16 years ago. Okay, अरे 16 years ago कैसे? हाँ ये है Hoopa. Don't worry old friend. अरे क्या है, एक मिनट. Don't worry old friend, for the future, for it no when she arrives. Let's go up graphic ticks. Okay, एक मिनट. I worry. I won't be able to protect you if she tries something. No, she will try something.
It's a matter of what it will be. That's why, my friend, you must go into hiding. I'll send your Pokeball adrift amidst the waves. You will surely be safer lost at sea than if you were to remain with me. If I am wrong and nothing happens, I'll call you back. But if this is to be your final time together, protect my son if he is in ever danger. And in turn, should the wrong sort of shot try to force your true power free, then trust him to protect you. Farewell, my good friend. अरे तो हम इसके बेटे हैं शायद. It's gone. So you came after all. Let's get this over with. अरे तो ये हमारे पापा है और हम इसके बच्चे हैं शायद. हाँ. 15 years later. Ah, how can I fulfill Grandpa's wish if I cannot catch a single Pokemon? I promised I would finish the war, but right now I can't even begin to fathom the possibility. Sorry guys. Whatever should I do? पता नहीं यार क्या क्या बोल रहा हूँ. A Pokeball here now. This Pokemon, it can't be. Hoopa. Ha ha ha. It appears Grandpa there may be a way after all. It is time for destruction to enfold the land and for the eternal flower to bloom once again. अरे तो ये है स्टोरी. अरे समझ गया तो समझ लो, मुझे पता नहीं. मैं तो कुछ तो मान रहा है. ये डार्क पोकेमोन है हुपा और हम इसे पकड़ना नहीं, हम इसके बच्चे पहले जो साइन बेसिक का था ना उसके बच्चे हैं और फिर हमें वो बच्चा ना है. हाँ तो पूरी दुनिया का बच्चा ना इन वार से बोराइन वार. ओह हुपा ने हमें टेलीपोर्ट कर दिया. एक लैब पे है शायद और वो देखो वो है विलन शैडो ग्रैंड है शायद वो. हाँ साइंटिस्ट व्हाट द हाउ डिड यू गेट इन हियर? क्यूट साइंटिस्ट what are you standing around for? Grab him. Now knock him out and lock him up in the airhouse. Except he's going to freak out when he hears about this. अरे यार हुपा, अरे उठा ले मुझे. He is unconscious हुपा. तो ये है हुपा का वो मास्टर जो हमें पहले दिखा था. Have I not told you countless times to stay out from my cube space unless you have express permission? I am aware you cannot travel through your rings anymore, but that does not give you the right to disobey me. And were you one responsible for bringing him here? I do not know what you wanted him for, but you have been a repeated nuisance ever since I found you on that beach last year. अरे तो ये वो बंदा नहीं है, ये कोई और बंदा है. लास्ट ईयर बोला था वो. अरे हाँ वैसे भी हो सकते 15 years later का सीन. अरे वैसे छोड़ दो. But I may not be your true guardian, but I am your trainer now. And as your trainer, I order you to keep these immature antics of yours now. Whatever, bother. Wait. Now that I think about it, I could work with this. अरे पता नहीं ऑटो रन नहीं बोला. अच्छा बात है. ये पोजीशन मिल गया और हमें यहाँ से बाहर निकलना है और है हमारा राइवल होगा शायद. सच में राइवल होगा पक्का था. ओके चलो ये पढ़ ले यार ये लोग. हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ये कुछ नहीं बोलेगा. हाँ who are you? Pretty sure I was by myself when they threw me in here. Nick, huh? And you're saying a magical portal? That's pretty dramatic entrance. Hey, those clothes. Do you live in Frozen Heights? I just moved in, but I guess I never stopped by to say hi. Say how buddy up together. अरे यार छोड़ दो मैंने जो. Oh yeah, I guess I should introduce myself. Myself partner. My name is. क्या रखे राइवल का नाम? मुझे कुछ नहीं है. मुझे कुछ नहीं आ रहा. मैं बस डैनी लिख रहा हूँ. मुझे कुछ नहीं आ रहा इसलिए मैंने डैनी रख दिया. बस कूल लग रहा था इसलिए. ओके इधर से चलते हैं अभी. Did you hear that, Nick? He should be tracked from the kid. Okay, ये है हमारा स्टार्टर. Give it Larvitar and Beldum. अरे गाइस बता देना मुझे ये गिबल बहुत अच्छा लग रहा है और फिर मेटाक्रॉस भी बुरा नहीं है और फिर ये भी बुरा नहीं है. अरे सब बच्चे ही है वैसे मुझे लग रहा है ना. मैं बेल्डम के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना. लार्विटार के पास तो देखने ही नहीं वाला. मैं गिबल को चुनता हूँ.
मुझे बेसिकली गिबल बहुत पसंद है, इसलिए गिबल को निकनेम नहीं दूंगा. आई विल टेक दिस वन. अरे यार ला बेल्टम, डिसहार्टेड बेल्टम लेफ्ट यार. ची. नाउ दैट we have our own Pokemon, let's head back to the exit. We'll force our way out of here. Okay, force करना जल्दी guys, let's go. Forcing is the best way. अरे तो छोड़ यार, बाद में जाए, हम ही जीतेंगे मैच. और यस, अनबाउंड का पहला मैच मेरा. इनका भी, इसका भी दस है, हमारा भी दस है. मेटल ग्लो कर रहे हैं, मेटल ग्लो ही करता हूँ. और कौन सा, अरे यार पॉइजन किंग मुझ पे क्यों किया. ओ सैंडस्टॉर्म. डार्विटार भी बुरा नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं है. अरे यार ये मुझ पर क्यों करे उसको रूपी, तू उसके ऊपर करो ना, वो तुमसे भी अच्छा वो क्यों है. अरे उस डार्विटार को करो, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो. अरे यार तुम मेरे ऊपर क्यों कर रहे जा रहे हो. अरे अब मैं तुम्हें मार दूंगा. स्कोरूपी नहीं, क्या नाम है उसका. हाँ चलो मैं जीत गया. No, my Pokemon. Not bad, Nick. You and I made a pretty good team. But I'll take it from here. Let me use these items on our Pokemon defeated the fight. अरे यार एक रोल गेम है. हाँ अरे वो मारा नहीं. Alright, I give up. I let you pass through. Please have mercy on me. Don't hurt me anymore, please. अरे मर्जी तो मैं, रहम तो मैं नहीं करना वाला, तुझ पे रहम. चलो चलते कर. उसने सब ट्रेनर को हरा दिया. ओ माय गॉड, ये हमें देख भी नहीं रहे, देख रहे पर मुझे कुछ नहीं बोल रहे. नाउ बर्न इट. As you observe, these spacemen are completely immune to extreme cold and extreme heat. What about immunity to electricity? We have yet to complete that, sir. It is difficult to enhance the spacemen quickly when we have our external research as well. Very well, this will do it for now. Alright, perfect timing. We are moving up our timetable. I am unsure as to why, but our target seems to have relocated to our mini city earlier than anticipated. With the Shadow Warriors enhanced and the package we need arriving, today we can begin the operation. Understood. There's just one more thing to discuss. I head out. The trespassers we locked up in warehouse have escaped. This grunt over here, let them get away. How bad is it? What did those two see? The first one, the boy with the red hair, saw nothing relevant. The second one, however, if the Fae finds out that he was in the lab, she will insist on relocating in the middle of our operation. You know that's time and resources we can't afford. Then make sure Fae doesn't find out about what happened. Our priority right now is obtaining the package needed for the mission. We'll deal with that second one who escaped later time. Understood. I have a plan to obtain that package, and it will even allow this failure of a grunt here to redeem himself. Once I have it, I'll head straight for the target. Good luck, Marlon. अरे ओरिजिनल में तो इसे मार देता है. हाँ ये नए वर्जन में कुछ चेंजेस है. मैंने खेला हुआ है. और close, we are getting so close. It's going to be long before the power finally becomes ours. The door has been forced shut behind you. अरे कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी वहाँ कहाँ जाना है. चलो वापस आ गया. Have you met an old man Log yet? He's supposed to be an expert in Pokemon stats or whatever. I just fulfilled him on what happened. I study all aspects of Pokemon stats and capture rates, and my title is Professor, not Old Man. Anyway, that must have been quite the ordeal you both went through. I am relieved to see both of you unharmed, and it seems you have managed to acquire the rare Pokemon. I was planning on giving Danny a Pokemon of his own someday, but now I don't have to. अरे यार मुझे मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं. Professor Log. Ho. Someday? I've been here a whole week and I was expecting one ASAP. Well, of course, I was always going to give you one, Danny. There are plenty of errands I am to
I am too old to run myself after all. It's just that you are insistent on looking for your parents. I keep telling you no one has seen them in years. Even if they are somehow still in boys find them is much too big a task for you alone. I was hoping you would accept that fact before giving you a Pokemon, but you refuse to listen. You may be my legal guardian or whatever in Boris, but you sure don't know anything about me. I am strong enough to fend or my fire myself. And when I see my parents, they'll see just how strong I am. Just like you're about to. Come on, Nick. I said I owed you a battle before. So let me show you both how a real trainer does it. Okay, तो the real trainer कौन देख लेते हैं डैनी. ओके फ्लिंच मत करना बस. अरे हमारे पास ये रफ स्किन नहीं है. अरे रफ स्किन बहुत अच्छा था. अरे जीत गया यार. मैं जीत गया. अरे मैं जीत गया. अरे सर्वाइव कर लिया इसने. अरे फ्लिंच. अरे यार फ्लिंच कर दिया इसने गंदे लाल बिटार ने. Looks like you still have a long way to go, Nick. अरे यार मैं जीतने ही वाला था. मैंने सोचा जीत के ये करेंगे पर इसने फ्लिंच कर दिया आपके लिए यार. That was a fine battle. Very entertaining by myself. No one cares how it made you feel, old man. I only care about how strong it made our Pokemon. Well, from what I can see, your Pokemon do have some nice stats. I see potential for them to become strong Pokemon someday. Finally, the first useful thing you said all day. And it's gonna be the last because I am out of here. Well, he's certainly a handful, isn't he? And now that she's gone, who will run my errands for me? अरे मैं नहीं करूँगा. अरे मेरी तरफ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? Yes, Nick. You seem rather capable. You should assist me. What a splendid idea. Your father was well known for helping others after all. It's only fitting that his son would follow his footsteps. As for the task, there's a package in Berlin town at the Pokemart. I would go get it myself, but my assistants and I are much too busy with our own research. Don't fret, the clerk knows someone will be picking it up in my stead. Since you have your own Pokemon with you, it should be easy. But just in case, this repellent will make the journey easier for you. रिपेल मुझे नहीं चाहिए था. अरे छोड़ दो ये फिर. पोकीडेक्स पोकीबॉल्स मिल गए. नाइस. रिपेल आई गिव यू देम अवे. अरे ये इसकी बात मैं कर रहा था. डेक्स नाउ ये बस हमें सैंडबॉक्स मोड ऑन करते मिलता है. There's something irresistible about that sign. ट्रेनर टिप्स. अरे ट्रेनर टिप्स मुझे नहीं चाहिए. चल यार हर गेम में ये फालतू चीज़ होता है. ओके लॉन्ग रेस्ट अप लाइक दैट यार. राइवल से हार गए यार. मुझे जीतने से था पहली बार. सुपर क्यों मिल गया. इस सुपर की मिशंस का देता है. The hero's journey. Get Professor Lock's package from the Berlin town market. मैं लेके आता हूँ. मुझे ही तो बस देना पड़ेगा. commonly known as infinite amount of space. अरे छोड़ दो यार. मुझे तो नहीं करना यार. मैं जीतने ही वाला था मैच. He just said doctor. Okay. Oh, you can just use it. यार हार मुझसे अभी उतरा नहीं जा रही. Item costume box. You can use it to You can use it to change clothes at any point in your journey. I filled it with different colors for you to choose from, but if you find more outfits, make sure you store them in your outfit as well.
स्टे सेफ आउट देयर हनी। मैं राइवल से हार गया, इससे बड़ी गुस्सा मुझे कुछ नहीं आता। ओके गाइस, तो हम चोर के थोड़े थोड़े भाग में आ चुके हैं, पर प्रोफेसर लोग का पैकेज ना हम अगले एपिसोड में देंगे, क्योंकि ये वाला एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया। क्योंकि अरे मैं लेंथी नहीं बोल रहा हूँ, बस वो तो स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ही था, आउट कट सीन्स वो कुछ ज़्यादा ही थे। और हाँ, प्रोफेसर लोग ने भी कुछ एक दो बैटल लड़े पर राइवल से हार गए, उससे दुख नहीं लुटा पा रहा मैं। और हाँ गाइस, अगली बार जब मैं राइवल से लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। और तब तक के लिए गुड बाय, और अगले एपिसोड देखना मत भूलना, और इस वाले पे लाइक भी कर देना।